And what I have for you today, I have for you a beautiful topic that is Mulk Raj Anand. Already I told you that we are covering what we are covering. यूनिट फर्स्ट हम लोग जो कवर कर रहे हैं, यूनिट फर्स्ट को कवर कर रहे हैं. आई हैव गॉन विद अरबिंदो घोष, आई हैव गॉन विद रविन्द्रनाथ टैगोर, आई हैव गॉन विद आर के नारायण. एंड नाउ इट्स टाइम टू गो विद हूम. नाउ इट्स टाइम टू गो विद मुल्कराज आनंद. आज हम लोग मुल्कराज आनंद को लेकर के बात करेंगे. When I talk about Mulk Raj Anand, first you have to come to keep in your mind कि Mulk Raj Anand was the contemporary of आर के नारायण. जो मुल्क राज आनंद थे वो आर के नारायण के कंटेम्परेरी थे. CONTEMPORARY. If anyone ask you what is contemporary, who is contemporary, एक ही समय में उन्हीं के समय में उनका भी जन्म हुआ था, उन्हीं के समय में उन्होंने भी काम किया. तो when we talk about Indian novelist, among Indian novelists we find three prominent figures. Indian novelist में तीन prominent figures we find, and they did a very good job. Among those novelists were Mulk Raj Anand, R K Narayan, Raja Rao. तीन ये नॉवलिस्ट थे जो अपने समय के थे, जो कॉलोनियल इंडिया में दे वर बॉर्न and they worked during British Raj, and after independent India they worked. तो ये जो तीन नाम मैंने आपको लिया, एक मुल्कराज आनंद है, एक आपके मुल्कराज आनंद के अलावा आई थिंक यू कम टू नो अबाउट आर के नारायण, यू कम टू नो अबाउट राजा राव. If you talk about these novelists, you will find that they were the contemporary and they were born in colonial India during British Raj. They wrote about India, about Indian sensibility, about Indian ethos, Indian culture, Indian civilization, issues and challenges related to India. जो भारत रहा है, जो भारत की संस्कृति रही है, जो भारत की साझी कंपोजिट कल्चर रहा है, उसको भी लेके उन्होंने बात किया. स्पेशली रूरल इंडिया and India during British Raj, the basic problems of India as caste issues, untouchability, especially Mulk Raj Anand का जो novel Untouchable है, in that novel he talks about caste issues, caste problems and untouchability. वो caste problems को लेकर के बात करते हैं, untouchability को लेकर के बात करते हैं. मुल्कराज आनंद के नावल में you find some other issues also, especially feudal system and how the feudal system was going to decline. जो सामंतवादी सोच है, सामंतवादी व्यवस्था है, वो कैसे डिक्लाइन हो रही थी, कैसे खत्म हो रही थी, उसके बारे में भी बात करते हैं. And you also come to know about some prominent figures in the works of Mulk Raj Anand, जिसमें उनका एक नावल है कुली, एक नावल उनका है, उसमें एक कैरेक्टर मुन्नू है, यू फाइंड. तो जो रूरल इंडिया है या जो एक चाइल्ड का ब्रिंग अप है, पालन पोषण प्रॉब्लम्स उसको फेस करना पड़ता है, दीज थिंग्स यू फाइंड. एंड देयर इज अ नावल अनटचेबल, एंड अनटचेबल इज इन सिलेबस in BA थर्ड ईयर. इन दैट नावल ही टेल्स अबाउट द कास्ट सिस्टम. उन्होंने कास्ट सिस्टम को लेकर के बात किया है. उसमें बाखा है, लाखा है, प्रीस्ट कालीनाथ है, और बाखा लाखा की जो बहन सोहिनी है उसका. तो जो अनटचेबल है और जो सोसाइटी के जो रिप्रेजेंटेटिव लोग हैं, हाउ डू दे बिहेव, हाउ डू दे टेक दिस थिंग्स, व्हाट्स देयर रिस्पॉन्स, स्पेशली यू विल कम टू नो, ये सब चीजें रही है. तो अगेन यू आर गोइंग टू गेट व्हाट, अगेन यू आर गोइंग टू गेट a beautiful, a famous, a well-known novelist of India who was born during British Raj, wrote during British Raj and after India. 1905 में पेशावर में उनका जन्म हुआ था. Now that time Peshawar was in Pakistan. Now this time Peshawar is in Pakistan because when he was born, that time Pakistan, Bangladesh, they were the integral part of India. But in 1947, when India got its freedom, Pakistan also came into existence.
सो जो जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उस समय केवल भारत था, उस समय भारत के अलावा और कुछ, भारत का मतलब कि पाकिस्तान का अस्तित्व नहीं था जब when he was born, मुल्क राज आनंद। एंड मुल्क राज आनंद का कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा है, काफी अच्छा नॉवेल है, काफी अच्छे ढंग से उन्होंने लिखा है, और जो सामाजिक बुराई he wrote these things and he awakened the people, and you will come to know he was much conscious, he awakened the people, he was much conscious. Just sharing with you, just sharing with you image, the picture of Anand you will, yeah, this is the picture. Is it visible? If it's visible, let me know. Yes, Yes, sir. sir. Yeah, now it's the Yes, beautiful sir. picture of मुल्क राज आनंद, या ये मुल्क राज आनंद की पिक्चर है, मुल्क राज आनंद की इमेज है। जब आप विकिपीडिया पर जाएंगे तो उनकी कई पिक्चर, उसमें उनके ओल्ड एज की, उनके यंग एज का पिक्चर यू फाइंड दैट ही वॉज अ स्मार्ट मैन हु स्टडीड अब्रॉड। इन्होंने बाहर से भी पढ़ाई की थी, विदेश में भी पढ़ाई की थी। अगर आपने देखा होगा अरविंदो घोष भी बाहर से पढ़ाई किए हुए थे, और आर के नारायण तो यहीं से ही पढ़े हुए थे, इंडिया से ही। So these were the prominent novelists. We must know about these novelists. We must know about these authors. और आखिर objective क्या है? What is the objective? Why these authors are in our syllabus? Because if you read only British literature, if you read only Shakespeare, if you read only some British author as Francis Bacon, as you can say Anton Chekhov. Anton Chekhov was a Russian short story writer. But if you read any foreign writers, you only come to know about their culture, you only come to know about their art, you only come to know about their civilization. This is why, for the first time in our syllabus, there is a unit, and in that unit, you only find about Indian art. You don't know, even you don't find their works, but in the first unit, the objective of the syllabus is that you must be familiar about Indian authors who wrote in English, Indian authors who wrote about their culture, Indian authors who wrote about their civilization, Indian authors who wrote about Indian sensibility, Indian authors who represented India all over the world, Indian authors who raised issues, challenges during British Raj India and after independent India. What were the problems? Caste system, discrimination, injustice, inequality, class struggle, and so many issues and challenges you find. So I just want to tell you only one point, that is the basic point. And what is that point? If you go with these things, if you find these things, here you will come to know, here you see, here you find that in what way these writers contributed. अगर आपको याद होगा, क्या आपने बार्बर्स ट्रेड यूनियन पढ़ा था? मैंने आपको पढ़ाया था? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, you find barbers trade union. So when you find barbers trade union, I just want to know, what do you see? स्टोरी, कोई स्टोरी किसने लिखी थी? Hmm. Sir, voice break हो रही। नहीं, my question is who has written barbers trade union? आवाज मेरी जा रही है? Yes, sir. आपकी Yes, sir. आवाज आ रही। Yeah, I'm asking if you come that story that is in your syllabus, who has written that story, barbers trade union? Sir, Mulk Raj Anand, I think. Yeah, Mulk Raj Anand. When you come to know about that story, Mulk Raj Anand, already I told you ki how the barber was treated by the landlord of that area. It was said that you are only barber, you don't have to be a doctor, या you can't take the uniform of a doctor. If you remember that, वहां पर भी प्रॉब्लम किसका था? अनटचेबिलिटी था, कि आप एक नाई है और नाई होने के नाते आप डॉक्टर बनने का ख्वाब कैसे देख सकते हैं? तो जो लैंडलॉर्ड था वो फ्यूडल सिस्टम को प्रेजेंट करता, सामंती सोच को, कि जो लोग जो है पैसे से गरीब हैं, या जो लोग जो है
जातिवादी जो मानसिकता रही है कि छोटी जाति का आदमी कैसे डॉक्टर बन सकता है। तो जब वो बार्बर्स ट्रेड यूनियन में यू कम टू नो कि कैसे वो अपने गांव के सारे बार्बर्स को इकट्ठा करता है और कहता है कि यू डोंट हैव टू सर्व दीज पीपल, सो दे गो ऑन स्ट्राइक। तमाम चीजें आप वहां पे देखते हैं। हियर आई वुड लाइक टू टेल यू कि ऐसे ही प्रॉब्लम्स को लेकर के मुल्कराज आनंद हमारे सामने आते हैं, एंड यू फाइंड दैट थिंग कि वो सब चीजें कैसे आपको वहां पे नजर आती है। ऐसे ही उनका नावल है मुन्नू है, ऐसे उनका टचेबल है, और भी उन्होंने बहुत सारे जो है नावल्स को उन्होंने लिखा हुआ है। सो जस्ट शेयरिंग द नेक्स्ट पिक्चर, and yeah, in that picture you will come to know about his biography. Yeah, I think it's visible. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, you find that जो मुल्कराज आनंद है, इनका जो जन्म हुआ है 1905 में। अगर ये हैंड से आपको लगता है कि नहीं शो हो रहा है, तो यू विल फाइंड ही वाज बोर्न इन 1905। उनका जो जन्म हुआ है वो कब हुआ था? 1905 में। आई थिंक अब और विजिबल होगा आपको। 12 दिसंबर 1905 को उनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पेशावर में। ही वॉज बोर्न ऑन 12 दिसंबर 1905 इन पेशावर। This is a very significant point. Born on 12 December 1905 Peshawar, NWFP, British India. Now in Khyber पख्तूनख्वा, पाकिस्तान। और ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में। दैट इज अनदर पॉइंट। आपको इनको जो है क्या ध्यान में रखना है? यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि ही वाज बोर्न ऑन 12 दिसंबर 1905 एंड ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया, पेशावर में। died 18th September 28 September 2004 at the age of 98। कहाँ पे उनकी डेथ होती है? पुणे, महाराष्ट्र में, इंडिया में। So you find the second important information. He was born in 1904 Peshawar, NWFP, British India। Second important point कि he died in 2004 on 28 September, aged 1984, पुणे, महाराष्ट्र, इंडिया। उनका ऑक्यूपेशन क्या है? राइटिंग करना। अल्मा मैटर क्या था? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की थी। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से पढ़ाई की है। खालसा कॉलेज अमृतसर से पढ़ाई की। इसका मतलब कि वो पंजाब से भी बिलोंग करते थे। तो उनका जो अल्मा मैटर है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, खालसा कॉलेज अमृतसर। Again, I just want to say, again, I want to tell you what he was born on 12 December 1904, Peshawar, NWFP, British India. Now in Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Died on 28 September 2004, aged 98, Pune, Maharashtra, India. Occupation writer. अल्मा मेटर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, खालसा कॉलेज अमृतसर। उनका जो समय है कौन सा रहा है? 20th सेंचुरी। उनका जो नोटेबल वर्क था कुली और अनटचेबल, ये दोनों उनका बहुत ही नोटेबल वर्क था। नोटेबल वर्क कौन सा? इंपॉर्टेंट वर्क था। एंड ही इज फेमस एज अ नॉवलिस्ट एज वेल एज शॉर्ट स्टोरी राइटर। वो नॉवलिस्ट के रूप में और शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में फेमस है। तो यू फाइंड नोटेबल वर्क कुली, अनटचेबल। यू फाइंड नोटेबल वर्ड साहित्य एकेडमी, नोटेबल अवार्ड्स उनको क्या मिला है? साहित्य एकेडमी अवार्ड 1972, पद्म भूषण 1967, इंटरनेशनल पीस प्राइज 1953। साहित्य एकेडमी अवार्ड 1971 में मिला है, पद्म भूषण 1967 में मिला है, इंटरनेशनल पीस प्राइज 1973 में मिला है। उनकी वाइफ का नाम क्या था? शीरीन वजीरदार। Shireen Wajidar was his wife. So you find here I want to know when was he born? उनका जन्म कब हुआ था? 12 December 1905. Yeah, 12th December 1905. What was the name of the place? Peshawar. Peshawar. Peshawar.
Peshawar. He was born in Peshawar. That means now in Pakistan. But when he was born in 1905, that was the part of India because that time they didn't come as a country or as a nation. When did he die? उनकी मौत कब होती है? 28 September 2004. 28th December 2004. Age is September 90. September, sir. 28th September. September. 28th September 2004. And what was the age? 98. 28. 28. 98. Aged 98. 98. Now the next point which I want to know, you find this my contribution, you find कि 98 साल की उम्र में he left the world and where did he die? 28 September 28 September 2004. 2004. Where did he asking when did he die? I'm asking where did he die? Pune, Maharashtra. India. Pune, Maharashtra, India. And what was his Yes. occupation? Writer and Writer. novelist. Writer. What did he write? Short story. He wrote short story, Yeah, novel. yeah, novels and short stories he writes. Can you tell me about his alma mater? Cambridge University College in London. University College. Yes, Khalsa yes. College in Khalsa Amritsar. College, Amritsar. Very nice, very nice. Cambridge University, University College, London, Khalsa College, Amritsar. What was his period? 20th century. 20th century. 20th century. ज्यादा काम उनका कब हुआ? 20th century में. दो ही died in 21st century. 2004 में अगर मरे हैं तो मौत 21st century में हुई है, लेकिन सारा काम जन्म और उनका जितना भी चीजें थी वो सब जो है आपका 20th century. Now just I want to know some important things. Can you tell me about his important works? What are his important works? Coolie and Coolie and Untouchable. Untouchable. Coolie and Untouchable. Yes, Coolie and Untouchable. Notable works में Coolie and Untouchable. Notable awards. Sahitya Sahitya Akademi Akademi Award, Awards, 1970, Padma Award, Bhushan, Padma International Peace Bhushan, Prize. Padma Bhushan, 1967, International Peace Prize. International Peace Prize, 1953. Yeah, Sahitya Academy Award in 1971, Padma Bhushan 1967, International Peace Prize 1953. And what was the name of his wife? Shireen Shireen Patidar. Wazifdar. Yeah, Shireen Wajifdar. That's good. You have done very well. Yeah, very well. Now, sharing image. So, in came to know about his works. Mozilla, please mute. After giving answer, please mute. In this work, you came to know about his works. When was he born? When did he die? What was the name of his wife? About his alma mater? About his occupation? These things you came to know. Now just sharing another image. Yeah. Here you find this point and I'm reading it. You have only to, you don't need to note down, but if you need, you can note down it. Otherwise, already I shared you meta link of this Wikipedia. You find that Mulk Raj Anand, 12th December 1905 में he was born, died in 28th September 2004, was an Indian writer in English. Notable for his depiction of the lives of the poor. किसकी लाइफ को उन्होंने किया है? लाइव्स ऑफ द पुअर. जो पुअर इंडियन है उनकी लाइफ को, स्पेशली उन्होंने कास्ट सिस्टम को दिखाया है इन ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी. Notable for his depiction of the lives of the poorer castes in traditional Indian society. Especially in his novel Untouchable, you find Bakha, Laka, Priest, Kalinath and
Sohini. How caste system was prevailed at that time, and how this system ultimately was a poor system, and that created hurdle in the progress of India, that created hurdle in establishing a good society. सो 1905 में जन्म हुआ, 2004 में उनकी मौत हुई है, इंडियन राइटर इन इंग्लिश है, एंड हियर यू फाइंड डिपिक्शन ऑफ द लाइव्स ऑफ द पुअर कास्ट इन ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी, वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ एंग्लो इंडियन फिक्शन. व्हेन यू फाइंड द वर्ड एंग्लो इंडियन फिक्शन, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है. एंग्लो इंडियन फिक्शन मीन्स इंडियन मीन्स भारतीय हु राइट इन इंग्लिश. एंग्लो, एंग्लो यहाँ पे इंग्लिश शब्द के लिए, दोज इंडियंस हु राइट इन इंग्लिश, they are known as Anglo-Indian. It means that if you go with this point, Anglo-Indian fiction, he together with R.K. Narayan, उन्होंने कहा कि उस समय, उनके समय में जो और भारतीय थे जो इंग्लिश में लिखा करते थे, उनमें से कौन कौन से लोग थे? आर के नारायण थे, अहमद अली एंड राजा राव. दीज नेम्स यू हैव टू रिमेम्बर, दीज नेम्स यू डोंट हैव टू फॉरगेट. ये नाम आपको ध्यान रखना, भूलना नहीं है. इनके कंटेम्प्रेरी कौन कौन से लोग रहे हैं? इनके कंटेम्प्रेरी में यू फाइंड किसको किसको? आर के नारायण, Ahmad Ali, Raja Rao was one of the first Indian-based writers in English to gain an international readership. इन सब लोगों को international fame मिला. Anand is admired for his novels and short stories, which have acquired the status of classics of modern Indian English literature. They are noted for their perceptive insight into the lives of the oppressed. उन्होंने उन लोगों के जीवन को लेकर के लिखा है जिनको सताया गया था. ऑप्रेस्ड, व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्रेस्ड? जिनके ऊपर अत्याचार किया गया था, जिनको सताया गया था. एंड फॉर देयर एनालिसिस ऑफ impoverishment, exploitation and misfortune, जो जिनको एक्सप्लाइट किया गया था, जो मिसफॉर्च्यून उन्होंने जिक्र किया है. तो आई जस्ट वांट टू नो हु वर द कंटेम्परेरी ऑफ मुल्क राज आनंद. मुल्क राज आनंद के कंटेम्परेरी कौन कौन से लोग थे? आर के नारायण, अहमद अली, राजा राव. आर के नारायण, अहमद अली एंड राजा राव. And R.K. Narayan, Ahmad Ali, Raja Rao or Mulk Raj Anand are known as Anglo-Indian या Indo-Anglian? Anglo-Indian. 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 What do you mean by Anglo? English Indian writer. English Indian Yeah. story. Born in India but wrote in English. इंडियन बॉर्न ऑथर्स, जिनका जन्म भारत में हुआ, बट दे मेड देयर करियर इन इंग्लिश. उन्होंने अपना करियर इंग्लिश में बनाया. तो आई जस्ट वांट टू नो कि मुल्कराज आनंद रोट अबाउट हु. मुल्कराज आनंद ने किसके बारे में लिखा है? कास्ट के बारे में. Caste system. कास्ट सिस्टम के बारे में, अनटचेबिलिटी के बारे में, ऑप्रेस्ड पीपल के बारे में, या ऑप्रेस्ड पीपल के बारे में, एंड द एक्सप्लॉइटेशन एंड मिसफॉर्च्यून्स. एक्सप्लॉइटेशन एंड मिसफॉर्च्यून्स उन्होंने. अब नाउ फाइन, उनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है, ये सब आपको ध्यान में रखना. ये चीज पूछा जा सकता है. ही बिकेम नोन फॉर हिज प्रोटेस्ट नॉवेल अनटचेबल. वो फेमस हुए अपने नावल अनटचेबल. कब आई है? 1935 में. जब पहली बार उन्होंने अनटचेबल करने के लिए दिया तो कोई भी आदमी पब्लिश करने को तैयार नहीं था, क्योंकि what that was the issue of the untouchability or caste system. अपने कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज किया था, तो no one was ready to publish this novel. Then you find Coolie, then you find Two Leaves and a Bird. He is also noted for being among the first writers to incorporate Punjabi and Hindustani idioms into English and was the recipient of the civilian honor of the Padma Bhushan. और उनको कौन सा सम्मान मिला है? पद्म भूषण. So I just want to know his work Untouchable published which year?
His work Untouchable published which year? 1935. 1935. Yes. And his work Coolie came which year? 1936. 1936. Two Leaves and a Bird came which year? 1937. 1937. Yeah, Two. that's good. So in this way, you came to know about his works, you came to know about his contribution, about whom he writes, when was he born, who were his contemporary, all these things you came to know. Now sharing the last image. Yeah, you find it. So you is that you find here the next image I'm sharing with you. And in this image, you will only come to know about his work. इस image में आप केवल उनके work के बारे में it here. Number one point you find what? You find that there is what? Touchable. उनका जो नावल अनटचेबल है 1935 में, कुली 1936 में, टू लीव्स एंड अ बर्ड 1936 में, द 9 में, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स 1999, द and the Sickle 1942 में, The Big Heart 1949, 1934 में, Seven Summers a Memoir 1950, The Private Life of an Indian Prince 1950 में, The Old Woman and the Cow 1960 में, The Road 1961 में, The Death of a Hero 1964 में, and you find short story collection The Lost Child and Other Stories 1934 में, The Barbers Trade Union and Other Stories 1944 में, The Tractor and the Corn Goddess and Other Stories 7 में, Reflection on the Golden Bed and Other Stories. So these things you find. I just want to know Untouchable कब आया है? 1935 में. कुली कब आया है? When did it publish? 1936. 1936. Two Leaves and a Bird, 1937. 1937. The Village, 1939. 1939. Across the Black Waters, 1939. 1939. The Sword and the Sickle, 1942. The Big Heart, 1945. 1945. The Last Child, 1934. 1934. Seven Summers, 1951. 1951. The Private Life of an Indian Prince, 1953. 1953. The Old Man and the Cow, 1960. 1960. The Road, 1961. 1961. The Death of a Hero. 1964. 1964. Now you find कि जो The Death of a Hero based on the life of मकबूल शेरवानी, ये किसकी लाइफ पर आधारित है? मकबूल शेरवानी, adapted as मकबूल की वापसी on DD कश्मीर होना चाहिए था. शॉर्ट स्टोरी उनका द लास्ट चाइल्ड एंड अदर स्टोरीज 1934, द बार्बर स्टेट यूनियन एंड अदर स्टोरीज 1944. ये हम लोगों के यहाँ सिलेबस में भी है, वहीं से वो स्टोरी लिया गया था. द ट्रैक्टर एंड द कॉर्न गॉडेस 1947, रिफ्लेक्शन ऑन द गोल्डन बेड एंड अदर स्टोरीज. दीज थिंग्स यू फाइंड. So today we have done what? Today we have done R.K. Narayan, and hope you all are enjoying this session. And you are just means covering your syllabus, whatever I have taught you, yeah, whatever I'm telling you. This is why I just want to say only one point: ki be ready for what? For your coming examination. जितना पहले पढ़ाया जा चुका है उन सब चीजों का आप रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करते रहिए. और हो सकता है कि आज से मैं टीचमेंट ऐप पर आपका टेस्ट कराऊं, आज से ही जो है जो पहले के टॉपिक हमने पढ़ाए. तो बी रेडी फॉर दैट थिंग. ठीक, ओके, मीट यू टुमारो. Thank